Hello everyone, welcome back to our lecture series of Ring Theory. We were discussing ideals और आज हम इस लेक्चर में प्राइम आइडियल्स और मैक्सिमल आइडियल्स को डिस्कस करेंगे और इन आइडियल्स की हेल्प से वी विल डिस्कस द इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड एज वेल। और इस लेक्चर में हम ये भी देखेंगे किस तरीके से हर एक मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल है, बट एवरी प्राइम आइडियल नीड नॉट टू बी अ मैक्सिमल आइडियल. Okay, so let us start this lecture by writing the definitions of both of these ideals. We will start the definition of prime ideal. Okay, so let me write the definition. First of all, we are writing the definition. First, prime ideal and it says that prime ideal A of a commutative ring R is a proper, okay, this word is important, proper ideal of R such that whenever we have that A and B are any element from the ring R and their product, that is AB is in the ideal A, that should imply that either A is in A or this B is in A. ओके, सो बेसिकली जब भी हम रिंग के दो एलिमेंट को कंसीडर करें और उन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट आइडियल में है और अगर ये इंप्लाइज करे दैट ए आइदर ए इज एन एलिमेंट ऑफ आइडियल ए और बी इज एन एलिमेंट ऑफ आइडियल ए, देन वी विल कॉल दिस ए एज अ प्राइम आइडियल. ओके, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो ये है कि हमारी जो रिंग है दैट हैज टू बी अ कम्यूटेटिव रिंग. ओके, और जो भी आइडियल प्रॉपर है उसे ही हम प्राइम आइडियल के जैसे डिफाइन कर सकते हैं. इसका मतलब द रिंग आर इज कैन नॉट बी अ प्राइम आइडियल ऑफ इटसेल्फ. ओके, so this is about the prime ideal. Now if we come to the definition of maximal ideal, then the conditions are same as for the prime ideal. Okay, we have maximal ideal. It says that again we required commutative ring and the ideal has to be proper. Okay, so a maximal ideal of a commutative ring R is a proper ideal of R such that whenever this B is an ideal of R and A contained in B contained in R, then we must have that either B is equals to A or this B is equals to R. That is, कोई भी आइडियल A हम मैक्सिमल आइडियल के फॉर्म में डिफाइन करेंगे इफ वी हैव एनी आइडियल बी इन दिस फॉर्म. ओके, इसका मतलब अगर कोई भी आइडियल बी ए और आर के बीच में है तो दिस बी आइदर इज इक्वल टू ए और दिस इज नथिंग बट द कम्यूटेटिव रिंग आर. ओके, सो बेसिकली हमारे पास ऐसा सिनेरियो है, यू कैन कंसीडर लाइक दिस, जैसे कि अगर हमारे पास ये रिंग आर है एंड दिस इज आर ideal A.
then there does not exist any ideal between A and R. अगर ऐसा सिनेरियो है तब हम इस A आइडियल को मैक्सिमल आइडियल बोलेंगे. ओके. और हम जब ये कह रहे हैं दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइडियल बिटवीन ए एंड आर, तो इसका सेंस क्या है कि ए को कंटेंट करने वाली दो ही रिंग है, या तो ए या फिर आर. और यहाँ पर हम यही सिनेरियो लिख रहे हैं कि जो कोई भी आइडियल बी वो ए को कंटेंट कर रही है. ऑब्वियसली एवरी आइडियल विल बी अ सबसेट ऑफ द रिंग आर. तो कोई भी आइडियल बी जो आइडियल ए को कंटेंट कर रही है, तो ये आइडियल बी केवल ये दो ही पॉसिबल आइडियल हो सकती है, या तो ये ए आइडियल रही होगी या फिर ये खुद पेरेंट रिंग आर रही होगी. ओके. सो दिस इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमल आइडियल. तो ये मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल की डेफिनेशंस के बारे में हमने बात की है. ठीक है. तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि दिस रिंग आर हैज टू बी अ कम्यूटेटिव रिंग, और जिस आइडियल को भी हम प्राइम आइडियल या फिर मैक्सिमल आइडियल की फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं, दे हैज टू बी प्रॉपर आइडियल ऑफ द रिंग. ओके. सो लेट मी राइट. So now we are writing the example so that we can consider some more concept about the prime and maximal ideal. So let us have some examples. We are having the example number 13, and what does it say? That let n be an integer greater than 1, then in the ring of integers, the ideal n z is prime if and only if n is prime. Okay. Prove this. ठीक है. सो व्हाट वी वांटेड टू प्रूव दैट किसी भी एन इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 1, इसके लिए हमें पता है कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन जेड इज ऑलवेज एन आइडियल. हम ऑलरेडी प्रूव कर ही चुके हैं. नाउ इसका एक्सटेंशन क्या है कि एन जेड आइडियल हमेशा प्राइम होगी इफ दिस एन इज प्राइम. ओके. एंड दिस कंडीशन इज स्ट्रॉन्ग, दैट इज दिस इज इफ एंड नॉन लीफ केस. तो हम ऐसे कंसीडर करेंगे कि एन जेड इज प्राइम आइडियल, तो उस केस में हम एन को प्राइम नंबर प्रूफ करेंगे. और जब एन प्राइम है तो उस केस में एन जेड विल बी अ प्राइम आइडियल. ओके. जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम बार बार मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल की डेफिनेशंस को अप्लाई करेंगे. और जब कभी हम किसी डेफिनेशन को या फिर फॉर्मूले को बार बार अप्लाई करते हैं तो उसका एप्लीकेशन प्रोसेस हमें उस कंसेप्ट की डेफिनेशंस या फिर फॉर्मूले के बारे में ज़्यादा फैमिलियर करता है. Okay, so I know you understood the definition of prime and maximal ideal, but the moment we apply these definitions तो यहाँ से हमें और clarity मिलती है. ठीक है. So let us start. हम suppose कर लेते हैं that let n belongs to z such that n is greater than 1. Okay, this is any number that is greater than 1. अगर n की वैल्यू 1 के इक्वल है तो सिंपली n z तो z ही बन जाएगा. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग n is greater than 1. ठीक है. then we know that nz is an ideal of the ring Z. Moreover, Z is commutative ring, and for
n greater than 1 and z is a proper ideal of z. ओके, जैसे ही हमारे पास जो गिवन रिंग है वो कम्यूटेटिव है और n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में एन जेड एक प्रॉपर आइडियल है। तो कम्यूटेटिव रिंग और प्रॉपर आइडियल होने की वजह से वी कैन टॉक अबाउट द प्राइम आइडियल। ओके, ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि आप ये समझ पाएं कि जब कम्यूटेटिव रिंग है और आइडियल प्रॉपर है तब ही हम प्राइम आइडियल के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई एम राइटिंग दिस लाइन हियर। सो in this situation we can talk about prime ideals. Okay, so now we are supposing that n trade is a prime ideal. Okay, और इस केस में we will show that n is prime. Okay, so let me write. First we are going to prove that nz is prime ideal, and this will implies that n is prime. ठीक है, ये कैसे प्रूफ करेंगे? अब एन जेड का प्राइम आइडियल होना क्या कॉन्सिक्वेंस हमें प्रोवाइड करता है और किसी भी नंबर को प्राइम कैसे प्रूफ करते हैं, ये दोनों कंसेप्ट हमारे दिमाग में होने चाहिए। एंड इन दैट सिचुएशन वी विल इजीली प्रूफ दिस पर्टिकुलर statement. Okay, so let nz is prime ideal of z. ठीक है, that is for a and b belongs to z if the product ab is in nz, then either a belongs to nz or we have that b is in nz. ओके, ये दोनों, ये जैसे ही हमने कहा nz इज प्राइम आइडियल तो उसका हमने कॉन्सिक्वेंस से ही लिखा है। ओके, नाउ यू कैन सी कि जब हम बात कर रहे हैं प्राइम आइडियल की और हमें किसी नंबर को प्राइम प्रूफ करना है, देन वी कैन सपोज दिस नंबर एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, सो लेट अस आइडेंटिफाई दैट ये प्रोडक्ट किस तरीके से हम लिख पा रहे हैं। सो नाउ वी shall show that n is prime. ठीक है, and for this let this n is equals to x and y where x and y are in z. ठीक है, so to show n is prime, we need to prove that either x is equals to n और y is equals to n। तो दोनों में से कोई एक नंबर n रहा होगा तभी ये प्रोडक्ट n आ रहा है। इसका मतलब वी कैन नॉट फैक्टर द नंबर n, और जब हम किसी नंबर का फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं एक्सेप्ट वन एंड द नंबर इटसेल्फ, तो वो नंबर प्राइम नंबर ही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हम जैसे 7 की बात करें तो 7 को हम हमेशा ऐसे ही लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू 7 है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 7, तो यहाँ पर y की वैल्यू 7 है। इसके अलावा कोई भी आपके पास इंटीजर्स नहीं होंगे जिनकी फॉर्म में, जिनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में वी कैन राइट दी number 7. Okay, of course you can consider the negative number, but again the negative implies the additive inverse, so again we are not talking about those. So let us proceed in this direction, and we are considering this n as a product of x and y, right? So if we are writing that n is in x and y, then now you can see that
n is equals to x and y, then for 1 is in z, this n time 1. ओके हम तो n टाइम 1 जो भी इंटीजर है ऐसे प्रोडक्ट को हम nz में कंसीडर कर रहे हैं. दिस implies that क्योंकि n 1 टाइम 1 is nothing but n, let me write this n. Okay, and this will implies that xy is in nz. अब nz जो है दैट इज प्राइम आइडियल और जब प्रोडक्ट प्राइम आइडियल में बिलोंग कर रहा है तो वी कैन राइट दिस एज x belongs to nz और we are having that y is in nz. ये हम क्यों लिख पा रहे हैं? since nz is prime. Okay, now we have two different part here. Let me write or. So you can see whenever x is in nz, इसका मतलब ये x n का कोई मल्टीपल रहा होगा. This implies that x is equals to say suppose some n time k1 where k1 is in z. Okay, और अगर y is in nz है तो यहाँ से हम क्या implies कर सकते हैं that y is equals to some n k2 where of course this k2 is in this set of integers. Now you can see हम कह रहे हैं कि हमने n को इस x y के प्रोडक्ट में लिखा है और x जो है दैट इज इक्वल टू n टाइम k1. तो यहाँ पर ये k1 दो ही पॉसिबिलिटी एक ही पॉसिबिलिटी रख सकता है कि दिस k1 हैज टू बी इक्वल टू 1. ओके, अदरवाइज अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में वी कैन नॉट से दैट n इज इक्वल टू the product of x and y, right? And of course this implies that k1 is equals to 1 or we can say and not this or we can say that k1 is equals to 1 and of course this will implies that x is equals to n. Okay, and simply you can write that k2 is equals to 1 and of course this is implying that y is equals to 1. तो अगर किसी नंबर को हम दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं और हम ये प्रूफ कर पा रहे हैं कि दोनों जब भी हम ऐसा प्रोडक्ट लिखेंगे तो हमेशा उनमें से कोई एक नंबर n ही बन रहा है, इसका मतलब n एक प्राइम नंबर है. ओके, सो व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट एंड इन both the cases n will be a prime. ठीक है, so thus you can see thus nz is prime ideal, this implying that n is prime. Now we are coming to the reverse direction. So what we can say whenever n is prime, so we are going to prove that n is prime. This will implies that nz is prime ideal. Okay, so let n be prime and a and b belongs to z such that the product is in nz. ठीक है, अब हमें nz को प्राइम आइडियल प्रूफ करने के लिए वी नीड टू शो दैट आइदर a इज इन nz और दिस b इज इन nz. ओके, सो what we can say that whenever AB is in nz, इसका मतलब ये जो AB है that is the product of n times some integer. Okay, so this implies that this product AB is equals to nk for some k is in z. ओके, अब अगर ए बी को हम दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम एन टाइम के, तो यहाँ से हम क्या इंप्लाइज कर सकते हैं? दिस इंप्लाइज दैट दिस एन डिवाइड्स ए बी. ओके, अगर एन के का प्रोडक्ट ए बी की फॉर्म में है तो हम ऐसा ही कहेंगे दैट एन इज डिवाइडिंग ए बी, और क्योंकि एन प्राइम है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं दैट एन डिवाइड ए और
n divides b. ये क्यों लिख पा रहे हैं? सिंस n इज प्राइम, जब प्राइम नंबर किन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो उन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर को वो डेफिनेटली डिवाइड करेगा ही करेगा. ओके, अब अगर n a को डिवाइड करता है, सो व्हाट वी कैन से, और ओके व्हाट वी कैन से, अगर n a को डिवाइड करता है तो व्हाट वी कैन से दैट दिस a इज इक्वल्स टू सम n टाइम, लेट मी राइट r1, और अगर n b को डिवाइड करता है तो वी कैन राइट b इज इक्वल्स टू सम r2, वेयर ऑफ कोर्स दिस r1 इज इन z, दिस r2 इज इन z. ठीक है, अब जैसे ही हमने n a को n r1 की फॉर्म में लिखा तो इसका मीनिंग क्या है? दिस इंप्लाइज दैट a इज इन n z, और यहां से क्या इंप्लाइज होगा? दिस इज इंप्लाइंग दैट b इज इन n z. ओके, क्योंकि ये n टाइम सम इंटीजर है तो ऐसे सभी नंबर n z आइडियल में ही जाएंगे. सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड दैट so whenever AB is in NZ, then this is implying that A is in NZ or B is in NZ, and obviously which implies that NZ is a prime ideal. Okay, so by writing this line we have proved that thus N is prime. This will imply that NZ is prime ideal of Z. Okay, so this is how you can see the concept of prime ideal. Okay.